also known as the Killer Squadron, at a ceremonial parade at the Naval Dockyard in Mumbai. देवी और सज्जनों, अब आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार हो श्रीमान। The Supreme Commander of the Indian Armed Forces, the Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind, will now review the Guard of Honor. He will be accompanied by Officer of the Guard, Lieutenant Commander Gaurav Kaushik, and Parade Commander, Commander Guru Prasad M. Pujari. सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के तैयार है श्रीमान। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर, भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद अब गार्ड ऑफ ऑनर की समीक्षा करेंगे। उनके साथ गार्ड के प्रथम अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर गौरव कौशिक और आज की अनुष्ठानिक परेड के परेड कमांडर कमांडर गुरु प्रसाद एम पुजारी होंगे।
Ladies and gentlemen, as you have just witnessed, the Honorable President has reviewed the guard. In a few moments from now, we will witness the commencement of the President's Standard Ceremony with the insertion of the drum toli for the pile of drums ceremony. God save done. God मध्य से 5 कदम बाहर को चल. God बिना फासले मध्य सच. God सबने देख. God wish Ram. Pran Sabhan. Pran Bhakta Sas. The pile of drums ceremony traces its history back to a time when the soldiers of the field used to arrange their drums in a pile to form an altar. Clergymen would then conduct religious services on the pile to pray for victory in battle. ढोल का ढेर समारोह का इतिहास बेहद पुराना है। एक समय था जब मैदान पर सैनिक एक वेदी बनाने के लिए ढेर में अपने ड्रमों को
व्यवस्थित करते थे। तब पादरी ढेर पर धार्मिक सेवाओं का संचालन करते थे और युद्ध में जीत के लिए प्रार्थना करते थे। अंदर लो। Ladies and gentlemen, as you can see before you, the Nishan Master Chief Petty Officer, Nishant Pangat, Master Chief Mech, 2nd Class Electrical, is carrying the standard. The standard will be uncased and handed over to Lieutenant Commander Anurag Sharma. Spun from the finest Indian silk, the President's standard is carried on a 7-foot-long staff, which is made of seasoned ashwood. Adorning the top of the standard is the 7-inch gold-plated national emblem, representing the Republic of India. राष्ट्रपति का निशान बेहतरीन भारतीय रेशम का हाथ से बुना हुआ होता है और यह 7 फीट लंबे राख लकड़ी पर चढ़ाया जाता है। निशान के शीर्ष पर 7 इंच का सोने से मढ़ा हुआ राष्ट्रीय प्रतीक है जो भारत गणराज्य का प्रतिनिधित्व करता है। Ladies and gentlemen, we will shortly commence the consecration ceremony by the priests. All personnel in uniform are requested to remain seated and remove their headgear on the command parade topi utar. ओम हरि ओम जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जनसामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणैः देवाय तस्मै नमः। महान देश के यशस्वी राष्ट्रपति द्वारा निशान प्रदान के अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, किलर स्क्वाड्रन सदा सर्वदा विजयी रहे। राष्ट्र की रक्षा और उन्नति के लिए किलर स्क्वाड्रन को आशीर्वाद। विजयी भव। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए अल्लाह, आज इस मुबारक मौके पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 22 किलर स्क्वाड्रन को निशान प्रदान किया जा रहा है। आज इस मुबारक मौके पर हम आपसे दुआ करते हैं कि 22 किलर स्क्वाड्रन के तमाम अफसर साहिबान और तमाम बहादुर नौसैनिकों के ऊपर अपनी खुसूसी रहमत नाजिल अता फरमा। खुसूसी तौर पर जंग के मैदान में इनको फ़तह और कामयाबी हासिल फरमा। आने वाली तमाम मुसीबतों से इनकी हिफाजत फरमा। इनके परिवारों के ऊपर अपनी खुसूसी रहमत नाजिल अता फरमा और साथ ही साथ हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे मुल्क के तमाम लोगों के ऊपर अपनी रहमत नाजिल अता फरमा। आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और भाईचारा अता फरमा। हमारी दुआओं को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आपे जान करे आप आपे आण रास तिसै अग्गै नानका खलै की चै अरदास। हे अकाल पुरख, अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो। आप जी दे हस्त कमलों की ठंडी ते मिठी छतर छाहट भारतीय नौसेना जिन्हां दे किलर स्क्वाडन नूं अज भारत के मानयोग राष्ट्रपति जी द्वारा कलब प्रदान किया जा रहा है। बहादुरां ने आप जी के चरणों का ओट आसरा तक्या है। सतगुरु जी रहमतां करनियां, मेहरां करनियां, इस स्क्वाडन की हर मैदान हर देवान रख्या करनी, तिन्हां नूं फतेह ही फतेह बख्शिश करनी, चढ़दियां कला बख्शिश करनियां, तिन्हां दे परिवारां विच सुख शांतियां ते खुशियां बख्शिश करनियां। सतगुरु जी इन्हां बहादुरां दे दिलां च हमेशा राष्ट्र प्रेम ते राष्ट्र रक्षा का जज्बा बख्शिश करते रहना, शुभ कर्म करन दी प्रेरणा बख्शिश करते रहना। देहे शिवा बर मोहे यह शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो, ना डरो अरिस्यों जब जाए लरो, निश्चय करे अपनी जीत करो और सिखाओ अपने ही मन को, यह लालच हों गुण तो उच्चरों, जब आव की ओद निदान बनाए अत ही रन मैं तब जूझ मरो, जब आव की ओद निदान बनाए अत ही रन मैं तब जूझ मरो। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Almighty God, our Heavenly Father, we thank you for this auspicious day. Lord, we are indeed blessed to witness the award ceremony of President's Standard to the Killer Squadron of the Indian Navy. We thank you, Lord, for the contribution and services that this naval fleet has rendered in safeguarding our country since its inception. It is our prayer, Lord, that you continue to grant them unflinching courage to defend our nation with honor, dignity, and devotion. Protect them as they discharge their duties and use their work for the good of our nation. We ask you, Lord, that this naval ship be a source of strength and refuge to all those who come and go from now and for the years to come. May you bestow your guidance and blessing on this event so that we can enjoy and appreciate its significance in our lives. We pray in Jesus' name. Amen. राष्ट्रपति का निशान प्राप्त करने के लिए तैयार शिवाद।
The Nishan Adhikari, Lieutenant Yuddhi Suhag, will now receive the President's Standard on behalf of the Killer Squadron. किलर स्क्वाड्रन की ओर से अब निशान अधिकारी लेफ्टिनेंट युद्धि सुहाग को राष्ट्रपति का निशान प्राप्त होगा। Ladies and gentlemen, this is a golden moment that we all have been eagerly waiting for. It is indeed a red letter day for the Indian Navy and the Killer Squadron. This prestigious moment that you have witnessed today will remain etched in our memory for a very long time to come. Ladies and gentlemen, the President's Standard will now receive the Rashtra Salute. All are requested to rise. Personnel in uniform are required to salute. निशान को राष्ट्रीय सलाम समाप्त। राष्ट्रपति का निशान अंदर लाओ। निशान चले बंगाल शस्त्र। निशान चले मध्य से तेज चल। देवियों और सज्जनों, किलर स्क्वाड्रन को भारत के राष्ट्रपति की ओर से मिलने वाला यह सर्वोच्च सम्मान निशान स्क्वाड्रन के पिछले 50 वर्षों में हमारे महान राष्ट्र के प्रति किए गए सराहनीय सेवा की मान्यता है। देवियों और सज्जनों, अब आप अपने स्थान ग्रहण कर सकते हैं। Ladies and gentlemen, the personnel in charge of the pile of drums are now removing the drums to complete the consecration ceremony.
और सज्जनों, भारत के माननीय राष्ट्रपति अब परेड को संबोधित करेंगे। Governor of Maharashtra Sri Bhagat Singh Koshyari ji, Chief of Naval Staff Admiral R. Hari Kumar ji, distinguished guests, officers and men on parade, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be with you on this momentous occasion to award the President's Standard to the 22nd Missile Vessel Squadron of the Indian Navy. I would like to congratulate all officers and sailors associated with the squadron for achieving this feat. I compliment you for the impressive parade and impeccable turnout. The timing of this award could not have been more befitting as our nation is celebrating Swarnim Vijay Varsh. The presentation of the standard is a testimony to the exceptional service rendered by officers and sailors, past and present, of this squadron to our nation. The 22nd Missile Vessel Squadron has undertaken a steady journey over the past 5 decades. The glorious history of this squadron began in 1970 with the induction of 8 ships of OSA-1 from the USSR. Known for their speed and firework, these ships played a crucial role in the 1971 war. Just 4 days ago, on December 4, we celebrated the Navy Day. As we know, Navy Day is celebrated on that day to commemorate the successful naval actions in the Arabian Sea and the Bay of Bengal during 1971 war. Operations Trident and Python saw our ships sinking Pakistan naval ships on the western seaboard and striking a lethal blow to the enemy war effort. 50 years ago, on this day, the 8th of December, killer squadron ships set ablaze the Karachi harbor, crippling enemy morale, enforcing blockade on Karachi and achieving total sea control. The fact that these ships, primarily acquired for shore defense, turned out to be the most potent offensive strike force for our Navy in battle symbolizes the sharpness and bravery of our Navy personnel. Over the years, the Killers Squadron has constantly evolved through the induction of Veer and Prabal class of ships. I am happy to note that the Prabal class ships are built in India. It showcases the Navy's commitment towards indigenization and our vision of Atmanirbhar Bharat. I look at this commitment of the Navy as a tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj, who is regarded by many historians as the founder of India's battle-ready naval force in the 17th century. I am happy to note that the squadron has earned several honors and awards for conspicuous gallantry and distinguished service. This includes Mahavir Chakra, Veer Chakra and Nausena medals, which is a proof of the bravery of the killer squadron. Ladies and gentlemen, I am told that the ships of this squadron have been deployed for a multitude of operations. They are securing our maritime borders through mission-based deployments. They are also undertaking diplomatic missions in the Gulf of Oman and Persian Gulf and anti-piracy operations. Our nation is a maritime nation and our Navy has a huge role to play in furtherance of our foreign policy and in protecting our national interests and commercial aspirations. It is a matter of great satisfaction that the Indian Navy has been successfully safeguarding our maritime interests with resolve and tenacity. A large share of global maritime trade transits through the Indian Ocean region.
Therefore, maintaining peace and tranquility in this region is of paramount importance, not only for us, but also for the entire global community. Today, as one of the largest navies in the world, the Indian Navy is looked upon by our maritime neighbors as a preferred security partner in the Indian Ocean region. The emerging geopolitical challenges in the Indo-Pacific region present India with an opportunity to play a pivotal role. As one of the leading navies of this region, I am told that the Indian Navy has invested significant effort in meeting all regional commitments and furthering our engagements with partners in the Indo-Pacific. I am happy to note that the Indian Navy has also been at the forefront to render assistance to the people during humanitarian crisis or natural disasters within the country and beyond. The Navy played a critical role in repatriation of Indian citizens during COVID-19 and rescue operations during Cyclone Taukte. Your extraordinary efforts in hazardous sea conditions have brought relief and solace to many fellow citizens and their families. I congratulate all of you for your untiring efforts in providing relief and hope to the people facing calamity, distress and hostile situations. Ladies and gentlemen, on this momentous occasion, I would like to congratulate all veterans and serving personnel of the squadron for your great service to the nation. I am told that some of the veterans who have been part of Operation Trident during the 1971 war are also present here with us. Let us express our admiration for them with a big round of applause. You have served the nation with great honor and distinction. Your untiring efforts and sacrifices have made our nation stronger and safer. I also pay homage to the brave sailors and officers who made supreme sacrifice defending the nation. India will forever remain grateful to them and their families. I wish the 22nd Missile Vessel Squadron of the Indian Navy the very best for the future. The nation is proud of you. I wish you and your families a glorious future. Thank you. Jai Hind. देवियों और सज्जनों, जैसे ही माननीय राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी, बैंड राष्ट्रगान बजाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और वर्दी में सभी नौसैनिक और अधिकारी सलामी दें। राष्ट्र सलाम।